Principle. Manual safety and fire mechanism ensures no accidental discharges. Two-stage trigger. The Lother-Walther barrel imparts a spin to every pellet, stabilizing its flight path, resulting in unmatched accuracy. Less maintenance, more performance, precision, power, purpose. Made in India. What you're seeing is the fully accessorized version, top of the line, competes with any international gun in the same category manufactured in this class. So, Pramod, congratulations. It was my desire, my dream to have a gun, and exactly the way I wanted it to be. And that is what we are going to give the world now. We're going to be selling it in India and across the globe as well. Hi everybody. Thank you all for being part of the journey of launch of the Trajectron. This story dates back when I was a kid. I used to go to my hometown for my vacations. I used to hear about guns, and that is when, I thought, or I said to myself that, one day I want to be shooting a gun. But at that age, there were a lot of restrictions where we are not allowed to touch it, or we had to be with a licensed owner to handle a gun. So the desire kept growing in my mind, and then over a period of time, I left that. As I was doing my graduation, and thanks to access to internet, I started Googling about airguns, and I said that yes, I do have a chance. I can buy a gun, I can import a gun. But as I got into it, I saw that there were a lot of challenges if an individual wanted to own an airgun. Okay, he had to go through a lot of training. He had to get a membership, and then paying through international payments, getting the gun to India, clearing it from customs. All this took me at least a year of time. And then I said that I don't want a gun which I can just shoot out of the box. I wanted something which I can tinker with. Where does that thought come from? When I was a kid, there was not a single moving toy left in my house. I used to open up all the robots, all the clocks, take out the gears and try and make something more creative for me. But it was destruction for the world at that time. That is where this inspiration grew. I got my first gun. I started working on the mods of the gun. And then I said, no, I'm not happy with what I have. I need more to it. So I started writing to international machinists where they could make those parts for me. And the same process, it took about a year before I would get the parts from them. That is when I said that, let me give it a shot. I started learning with designing softwares, and I started making parts and getting it machined in India. Now there was a challenge there too, because if you would make one component, no machinist was interested in taking orders for it. So I had to go in batches for that. And when I made it in batches, I started selling the surplus. Now the roles had reversed. I was initially buying from abroad, but now we were selling our components abroad. One day I get a call from one of my dealers where we used to buy our air tanks. And he said, one of our VIP clients is trying to reach you. I said, I'm sorry, I missed his call, I'll get back to him. So I pick up the phone, I call up that number, and we had a chat for like 45 minutes. He said, you have such good exposure with guns, you've been making such beautiful parts, why aren't you manufacturing airguns? I said, I don't have a license. So why don't you apply for one? So I said, okay. And we hung up the phone. So I said, he was some Tom Dick Harry giving me bull talk. I just ignored that, hung up the phone. After 15 days, he called me again and asked me that, did you apply for the license? I said, no, I thought you were joking. He said, no, I'm very serious about that. I said, okay. So I hung up the call and then I Googled Prahlad Kakar. I said, no, this isn't some Tom Dick Harry. And he's the guy who can support you, can get you to the other side. So that was it, a couple of calls, and then
We got started with the whole process of the gun in 1 year's time, thanks to his unconditional support and backup that I had, and we had the license in hand. This was about 2018-19. We had started just post-COVID, I think it was 20s. We started working on the prototype. We made 4 models before we froze on the current design. And here it is, right in front of you. Of course, it's covered with satin. The unveiling will happen in a short while. So that's the story and the inspiration for me to come up with a gun. It was my desire, my dream to have a gun, and exactly the way I wanted it to be. And that is what we are going to give the world now. We're going to be selling it in India and across the globe as well. We have done thorough endurance testing on the gun as well. We fired like more than 60,000 shots through that. My guys are witness to that who've been working with me. They even cursed me at times, कि sir बस हो गया, अभी नहीं होगा और testing. You know, we had literally reached that stage in life. So that's it. The rest of the revealing will happen in due course. Finally, I would like to thank everyone for being part of this event. I would like to thank Brian, who has been a pillar of support, because when I went to Prahlad for the license, what Prahlad said is, don't worry with the rest of the framework. Money, you got to talk to my friend. So even though Brian D'Souza said that he's just the MC, that's not the way it is. He's the guy who got all the funds together. And Brian introduced me to Sandeep Ghate, who then connected us with all the investors. He's also been a pillar of support. He's part of us. He's drove all the way from Pune, without which I wouldn't be standing here with the model. Thanks to the PR team, the press, the branding team, the production team, who have been working day and night for the last month for this reality to happen. Thank you. Thank you. Who has many words to say. Let me not introduce you, but let me force upon you, Mr. Prahlad Kakar. You can be seated, I guess. No, it's better to stand. Good afternoon, everybody. I'm so glad to see so many bright faces, all dying to see the object of great desire and beauty. And for a change, it's not 36, 24, 36. So, this particular journey is quite interesting actually, you know. I'm the owner of many guns, I'm very passionate about guns. And one day I had to fix one of my guns, and I asked the person from Luxor, who have the tanks with the PCBs, that can you recommend a really good armorer for me, because I need to do some modification on a very old Tier 1. And they put me on to Pramod. And in my conversation with Pramod in the middle of the night, which was around 11:30 at night, I realized that not only is he an armorer, but he's also a manufacturer and a maker of parts to make guns to order for people abroad. Not a full gun, but to customize guns that people have already bought. And he was being recommended by the parent companies, like FX, some of the best companies in the world. I said, Ghoom Firke, why are they recommending somebody in India to machine the parts for customizing guns all over the world? I said, this guy can make a gun, which is as good as any in the world. So I asked him, I said, can you make a gun as good as any in the world? He said, yes. So I said, what the fuck are you doing? I mean, why aren't you making it? So he said, I don't want to deal with the government, which is possibly very sensible. So I said, okay, so if somebody deals with the government, will you make the gun? He said, you get me the licensing, I'll make the gun. And that was the deal. So I dealt with the government, and I walked in with my hat and my cigar, and the government actually listened. Strangely enough. So I don't know whether it was me, it was the hat, or it was the cigar. But altogether it actually worked. We got a license in about a year and a half flat for the gun,
And the rest is history. And the rest of the time, Pramod and Brian raised the funds for us to actually put up a factory, to hire all these young engineers who are so dedicated, and to see the vision of the gun, because there is no such weapon that has been made in this country ever, of this caliber, of this kind, of this precision, of such an international standard that we are so proud of it. So we now let's do the honors and unveil the Virgin. Please ask the Virgin to wait. We need to have a few words with the Chief Guest also. Basically, if you look at the market, the passion taken for granted. If you look at the market, all right. Last year, the Asian Games, the largest medal-winning category in sports was shooting. 23 medals, mostly won by women. So I know there are more men over here than women, but women have won most of the shooting medals for this country. Shooting has now become a sport. It's become a discipline. Schools are inculcating it because of the various behavioral characteristics which embellish an individual, which is discipline, which is focus, stability, stuff like that. So, please, if you guys have come here to see the launch and we talk about guns, it's an air gun available off the shelf. Like to repeat myself, to anyone who's above the age of 80, who's an enthusiast, who's a hobbyist, who competes. Because remember this, all competition guns are PCP guns. PCP stands for pre-compressed pneumatic. Pre-compressed pneumatic is just pressurized air. So all competition have PCP guns. All right. So these are the categories that are there. It's an infant market right now in the country, and we hope that as we launch, we create more awareness, the category grows, and we invite competition also. Good afternoon, ladies and gentlemen. Soldiers speak less, act more. So I'm sorry. I'll try to follow that dictum, say a few words, but I'm eagerly and itching to get on with the action part, which is the production, the precision, the proliferation of this gun as it goes out into the society. It's just about two years ago, and we were just sitting together, Pramod, Prahlad, Brian, and Arawn, conceptualizing this. And it's amazing how in the last 2 years, this has built itself into a world-class product. And you'll be very, very proud that this is not only made in India, it's done at a time when shooting as a sport is peaking in India and internationally. Aside from that, I see a lot of uses of this gun, perhaps in the National Cadet Corps, perhaps in sport, in shooting ranges coming up, in shooting clubs, which is something which is quite common overseas. And as we go along, and as we improve, and as the product improves, there will be many more use cases as this journey that's only started. So with that, I just like to place on record great appreciation for Pramod and his team of Trajectron. A whole lot of motivated guys I've met and seen. You guys have only just started, and I wish you great success because this is going to go all the way. And of course, many kudos to Prahlad, to Sandeep, to Brian, and the rest of the guys who've been part of this journey. Congratulations. Wish you great success. Thank you. What you're seeing is the fully accessorized version, top of the line,
competes with any international gun in the same category manufactured in this class. So, Pramod, congratulations. The hard work starts now. Start selling. Sir, क्या रुके हो पास? में R&D किए हुए हैं. इस मॉडल के बाद हमारा गोल है कि हर एक साल एक नया मॉडल लॉन्च करें. सर आज के दौर की बात करें तो सब आजकल पिस्टल लेने का ट्रेंड एक चला है. हाँ जी. तो क्या आप आगे चल कोई सवाल बनाएंगे गन की? पक्का पूरा रेंज बनाएंगे. पूरा रेंज बनाएगा. पिस्टल से राइफल से कार्बाइन. पिस्टल शूटिंग जो है हमारा ओलंपिक स्पोर्ट जो है बहुत बेहतरीन हो गया है क्योंकि लड़कियां और लड़के दोनों have become very professional. पिस्टल हल्का है ना पिस्टल. ये PCP पिस्टल जो होता है नॉट अ फायर आर्म पिस्टल, उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स दैट आर नीडेड टू बी पुट इन बिकॉज बहुत भारी हो जाती है टैंक करके. एक हाथ से अगर पिस्टल आप करेंगे तो इतनी भारी नहीं होती. तो हाउ टू मिनिचराइज द पिस्टल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एक्यूरेसी एंड क्वालिटी, वो हम देखना चाहते हैं. तो उसके लिए थोड़ा आगे निकलना. स्मॉल पिस्टल बनाएंगे आगे हाँ चल. जी. तीन किस्म के गन होते हैं. पिस्टल, कार्बाइन, राइफल. पिस्टल छोटा है, कार्बाइन उससे थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा राइफल. ये कार्बाइन है जो राइफल का काम कर सके. ये टेक्नोलॉजी है. कार्बाइन दिखता है लेकिन राइफल जैसा आपको ये फंक्शनैलिटी मिलेगा. और इसमें खूबी यह है कि सप्रेशन है. तो आप अगर टारगेट प्रैक्टिस अपने गार्डन में करना चाहते हैं, आपका बंगला है, आपका छोटा सा गार्डन है, उधर आप टारगेट सेटअप करके सेफ्टी देखते हैं तो आवाज सप्रेस इतनी हो जाती है कि आपके नेबर को कंप्लेन नहीं करते आप क्या क्या कर रहे हैं यार, शूटिंग कर रहे हैं. सर आपने गार्डन के बारे में ऑलमोस्ट सर कोलकाता बहुत बड़ा मार्केट है हाँ. गन का. तो क्या आप लोग लॉन्चिंग वहीं से करोगे? सॉरी, कोलकाता बहुत बड़ा मार्केट है आर्म्स का. हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है. डिस्ट्रीब्यूटर्स के नीचे होंगे डीलर्स. आज के तारीख में लगभग 400 डीलर्स हैं इंडिया में जो एयरगन्स ऑलरेडी बेच रहे हैं. सब अलग अलग स्टेट्स में, नॉर्थ वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट जो जोन है आपके इसके अंदर, इनके थ्रू हम चलेंगे. सर ये जो सेफ्टी फीचर्स के बारे में मेरे को समझना था कि अगर गलत हाथ में लग जाए तो वो किसी ह्यूमंस को डैमेज कर सकते हैं. उसके लिए आपने कुछ ट्रेनिंग या रिस्ट्रिक्शन? सरकार ने रिस्ट्रिक्शन बनाया है एयरगन्स के लिए. एक तो कैलिबर, जो जितना बड़ा छर्रा हो सकता है, तो इतने छोटे छर्रे में 1.177 छर्रे पे ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हो सकता है. अगर आप डिलिबरेटली किसी के हाथ में मार दो तो फिर डैमेज हो सकता है. पर वो तो आप पत्थर भी उठा के हाथ में मार सकते हैं तो उससे भी डैमेज हो सकता है. पर ये ज़्यादातर पावर जो है गन का एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड टू 15 फुट पावर एट द बैक. तो इसका पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है, बट एट अप टू 50 मीटर इट इज एक्यूरेट. नॉट लीथल बट एक्यूरेट. तो टारगेट के लिए इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेपन एंड इट इज नॉट लीथल टू ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट इज द होल क्राइटेरिया ऑफ द गन. सर टारगेट जो पब्लिक है वो कौन है और क्या आप इसे कोई नॉर्मल इंसान भी खरीदना चाहता है? सो हाउ कैन दे रीच यू लाइक उस बारे में अगर ये गन जो है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आधार कार्ड और 18 साल वही क्राइटेरिया खरीदने के लिए. आधार कार्ड चाहिए और 18 साल के ऊपर होना चाहिए. इंटरनेशनली भी क्या इसे सेल किया गया है? इंटरनेशनल जो सेल है उनका अलग स्पेसिफिकेशन. जो इंडिया में हमारा रूल है 15 जूल्स का आउटपुट आना चाहिए, उससे ज्यादा करते नहीं. अमेरिका में 50 जूल्स का आउटपुट है, 3 गुना ज्यादा. तो कस्टमाइज करना पड़ेगा. तो गन तो बेसिक है, कस्टमाइज करना पड़ेगा. मार्केट के जो मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है. हम यूरोप में जाएंगे, वहाँ पे भी अलग रिस्ट्रिक्शन. यूरोप का ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है. हमारा सबसे ज्यादा 12 जो है, हमारे 15 है. तो पावर जो है, ठीक है, हमारा बहुत कम है कंपेयर टू जो रिलायंस में हुआ है. सर मार्केट वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू MRP. यस. The market price is 110 and taxes are next 1,10,000. 110,000 plus GST. License or without license? This is No a license. without you don't need a license. Only Aadhar card Okay. is required. और 18 साल का आपके And 18 years of age.
You can buy it off the shelf. आप सीधा शेल्फ से खरीद सकते हैं। 1,10,000 इज द कॉस्ट ऑफ बेसिक गन। उसके ऊपर एक्सेसरीज होंगी जैसे टेलीस्कोपिक साइट है और साइलेंसर। वो अगर आप डालना चाहते हैं इनको तो दूसरा एक्स्ट्रा। कोई भी आम इंसान इसे खरीद सकता है। कोई भी लाइसेंस, सिर्फ लाइसेंस, आधार कार्ड वाला और लाइसेंस डीलर वाला। और बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए और बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए। नहीं परचेज करना। नो लाइसेंस, आधार कार्ड और 18 साल। नो लाइसेंस। आधार कार्ड और 18 साल का। तो आपका आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको तकलीफ होगी। लेकिन मार्केट में सपोज मैं ऐसे हथियार खरीदता हूँ और मार्केट में ओपन लेके चलता हूँ और ये कहता हूँ कि मैंने तो आधार कार्ड एंड नहीं, क्या होता है ये डिसिप्लिन रहता है, प्रोटोकॉल रहता है। आप अगर इसको पब्लिक में जाके किसी को धमका दोगे आप सीधा अंदर जाओगे। आप चाकू लेके रास्ते पे घूमेंगे या आप अंदर ही जाओगे। वैसा ही है अंदर जैसे ही आपने बंदूक खरीदा, उसके कुछ कायदे कानून है वो आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आ गया, आपके गाड़ी में डिक्की में है तो आपने निकाल के खड़े हो गए रास्ते पर, सीधा अंदर का। वो हमारा क्या कर सकते किसी को आप थ्रेटन नहीं कर सकते। ये पर्पस है हॉबी एंड स्पोर्ट का, फोकस उसी का है। जैसे इन्होंने अभी एक सवाल पूछा कि कौन है कैटेगरी, पीपल हु हैव बंगलोज, जिनके फार्म हाउसेज है, जिनके लैंड है, वहाँ पे टारगेट्स लगा के लोग शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं और इसे फील्ड टारगेट कहते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज के टारगेट्स आते हैं और आप उसको चैलेंजिंग डिस्टेंस पे रखते हैं। जब आप फ्रेंड्स कॉम्पीट कर रहे हो तो वो बहुत ही एक मजेदार स्पोर्ट है। तो दिस इज वेयर इसका प्राइमरी यूज। हमें भी बता देते हैं बॉम्बे में 40 शूटिंग गैलरी है, शूटिंग जोन 40 और छोटे छोटे इंक्लोज एरिया। क्योंकि इसको आपको सिर्फ 10 मीटर चाहिए और वो कितने भी नैरो हो सकता है आपका स्ट्रेच, आप वहीं पे शूटिंग कर सकते हैं 10 मीटर से लेके। स्कूल्स में भी एयर इंडिया कॉलोनी कलीना के बच्चों के लिए देखो शूटिंग रेंज द कोच। फ्यूचर मार्केट क्या है सर? फ्यूचर मार्केट इंडिया का किस तरह से आप देखते हैं इंडिया में? तो हम सिर्फ शुरुआत की। फ्यूचर मार्केट बहुत मैं नंबर नहीं डालना चाहता हूँ कि नंबर से कुछ नहीं, लेकिन अभी आप सोचो कि मोबाइल फोन जब पहले आए थे इंडिया में 60 रुपीज इनकमिंग, 60 रुपीज आउटगोइंग, मार्केट कितना था? ठीक है, तो मार्केट विल इवॉल्व, मार्केट बढ़ जाएगा जैसे हमारा अवेयरनेस आ जाएगा, जैसे और कॉम्पिटिशन आ जाएगा, मार्केट एक्सपैंड हो जाएगा। और हमें क्या पहले साल में 2000 बेचने के लिए हमें कुछ तकलीफ नहीं। ये है कि ये क्वालिटी बनाने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि एक दफे पॉपुलर हो जाए इस कंट्री में, हमारी आबादी इतनी है और अफोर्डेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि सब बाहर के जो प्लेयर हैं वो अंदर कूद जाएंगे देश में। तो वी हैव टू हैव अ गन दैट इज एज गुड एज दैट। इफ यू डू नॉट हैव अ गन व्हिच इज एज गुड एज द इंटरनेशनल गन, then people will not buy our gun. Because all the international players that come into the market because it's such a big market. 1.3 बिलियन मार्केट है। सर लॉसन और टर्बो जैसी कंपनियां जो हैं गन बना रही हैं, लॉसन और टर्बो LNT इंडिया में, Those are firearms. फायरआर्म्स, वो तो फायरआर्म है, वी आर नॉट अ फायरआर्म। जितने प्राइवेट प्लेयर्स की आप बात कर रहे हो, अडानी हो गया, LNT हो गया, दे आर मोर इनटू फायरआर्म्स, डिफेंस। डिफेंस सेक्टर को केटर कर रहा है। वी आर केटरिंग रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। वो कारतूस यूज करते हैं, ये होगा फायरआर्म, ये होगा एयरगन। उसमें आपको लाइसेंस आपको लाइसेंस चाहिए, इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। बिग फर्क है। पर इंजीनियरिंग में फर्क इतना है कि अगर आप 300 बार मतलब 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर वो गैस है, उसका जो एयर है टैंक में, तो एक लीक भी हो जाए ना छोटा सा किसी तरह का एट दैट प्रेशर, गन यूजलेस हो जाए। तो इतना प्रिसाइज इंजीनियरिंग इसका है कि 40 पार्ट्स हैं गन, 40 मूविंग पार्ट। ईच वन हैज टू बी एब्सोल्युटली टॉलरेंसेस आर जीरो। So is there competitiveness in the market? How the player है कि आपके अलावा? है इंटर मार्केट में प्लेयर है, ठीक है। एयरगन कैटेगरी में बहुत कैटेगरी मिलते हैं। पहला जो मिलता है बेसिक कैटेगरी वो स्प्रिंगर है, उसको तोड़ के सूगा डाल के वापस डालो, वो बड़ा है, सिंगल शॉट है, सिंगल शॉट, ठीक है। उसके बाद आता है वो स्प्रिंगर बोलते हैं, बहुत हो गया। आप किसी भी गन शॉप में जाओगे तब दिखेंगे आप। उसके बाद PCP गन आता है, हायर टेक्नोलॉजी, मोर एक्सपेंसिव,
क्योंकि इनपुट जो है इसमें हाई एंड एक्यूरेसी, लाइक एविएशन ग्रेड इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड, हाई प्रिसिजन एविएशन ग्रेड इंजीनियरिंग। Thank you guys.